Assalamu alaikum. Hi guys. Today we're going to talk about microbiology books. So microbiology, as the name suggests, okay, it's the study of microbes. तो microbes क्या है? आपके viruses, bacteria, fungi, parasites, you name it. तो इनको study करना is so interesting, and it's like probably the most fun subject in MBBS. So, the first book that I will mention is Review of Medical Microbiology and Immunology by Warren Levinson. ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है, इसको तो हमने ख़रीदना ही ख़रीदना है। एग्ज़ाम की तैयारी भी इसमें बहुत अच्छी हो जाती है, हर चीज़ है इसमें, स्टूडेंट फ्रेंडली भी है, साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, ईज़िली रिटेन भी हो जाती है, तस्वीरें भी बहुत अच्छी हैं, सो इसको तो लेना ही है। ये वाली बुक जो है, टीचर्स तो शायद आपको ना बताएं, लेकिन आपको सीनियर्स ज़रूर इसका बताएंगे जिनको पता है इसका। दिस इज़ मेड रिडिकुलसली सिंपल। ये भी एक सीरीज़ है, लेकिन इसकी माइक्रोबायोलॉजी वाली सबसे हिट सीरीज़ है। इट्स सो ऑसम कि आप इसको खोल के खुद पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा व्हाट आई मीन। इट्स लाइक रीडिंग अ फन कॉमिक। मतलब अगर मैंने वायरसेस का चैप्टर पढ़ना है ना, तो मैं इतना इंजॉय करूंगी उसको कि मैं अगले 2 चैप्टर भी पढ़ बैठूंगी। इतनी अच्छी बुक है। इट्स सो वर्थ बाइंग। मेरा सीक्वेंस ये होता था, मैं पहले इस बुक को पढ़ती थी जस्ट टू गेट माई इंटरेस्ट डेवलपिंग, एंड देन आई वुड रीड द मेन टेक्स्ट बुक। तो दैट वुड मेक इट सो मच मोर ईजियर। चीज़ें याद भी बहुत अच्छी तरह रहती हैं, बड़े ही क्लेवरली डिज़ाइंड डायग्राम्स हैं इसमें। एंड माइंड यू, दिस बुक इज़ नॉट लाइक अ non-serious kind of book. This book is written by actual doctors, and I would think they're really awesome doctors जो out of the box think करते हैं और teach करते हैं। तो डेफिनेटली कोई और मेड रिडिकुलसली सिंपल आपने बुक लेनी है या नहीं लेनी, ये वाली डेफिनेटली लें, बहुत पे ऑफ करेगी। Sketchy Micro, this is not a book, it's a learning resource. ये वीडियोस होती हैं। इसमें फॉर एग्जांपल, लेट्स से फंगस में कैंडिडा वाला फंगस हम पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर एक वो तस्वीर डिज़ाइन करेगा। उस तस्वीर के एक एक एलिमेंट्स उस ऑर्गेनिज्म की किसी एक फीचर को आपको याद करने में हेल्प करेंगे, साथ कोई स्टोरी वो बना देगा बैकग्राउंड में। तो इट्स फन इन द मोमेंट, लेकिन मेरा गिला इस वे ऑफ टीचिंग से ये है कि आप कितनी तस्वीरें याद रख लोगे, मतलब आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी है तो क्या बात है। लेकिन एक आम बंदे के लिए उस वक़्त वो वीडियो याद रहती है, लेकिन इट्स वेरी ईज़िली फॉरगेटेबल इफ यू डोंट कीप रिवाइजिंग इट। तो डेफिनिटली दिस इज़ नॉट लाइक अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग। यू कैन यूज़ इट फॉर फन टू रीइंफोर्स व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड, बट don't count on this, for your exams. So then we have the Kaplan series. मैं हर वीडियो में Kaplan और BRS को mention करती हूँ। Again, ये primary book नहीं है, but it's a good revision book. It has good tables and it's very nice and concise. BRS series, मुझे personally ये वाली इतनी अच्छी नहीं लगी थी। अगर आपने BRS में से कोई book खरीदनी है ना, तो go for BRS physiology. Microbiology, immunology बस ठीक है, वही बात है, listed bullet points है revision के लिए। लेकिन textbook I think काफ़ी है for micro. So yeah, if you like this video, please like, comment, share, and subscribe, and follow me on my social media, and I will see you in the next video. Bye.